The next topic is impulse of a force. From the Newton's second law, you know that the sum of all the forces is equal to mass into acceleration. We can write down the acceleration in the term of velocity like this: rate of change of velocity with respect to the time in derivative form. Let the mass of the body is constant during the motion. So m is a constant term, so we can take inside the derivative as a constant. तो हमने m को क्या किया, कांस्टेंट कंसीडर कर करके और डेरिवेटिव के अंदर ले लिया m into velocity and of the derivative of this with respect to the time. Now multiply this equation with the time dt, small infinitely small time dt. So this derivative is cancelled out by this multiplication of dt. We will get the just derivative of a, that means rate of change, the change of a mass into velocity, that is known as a momentum. So that is the meaning, the differential change in the momentum, that is the differential change. This change will take place in very infinitely small time period. In the momentum of a particle during the interval dt is equal to the force which are acting very short interval of a time. Dt is very short interval of a time, and that is known as the impulse of a force. The force which is applied very short interval of a time, that is known as impulse of a force acting during the same interval. ठीक है, जिस दौरान मोमेंटम चेंज हुआ उसी टाइम के दौरान आपका क्या अप्लाई हुआ है, दिस फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, जनरली इन impulsive force a quantity of a force is very large, the quantity of magnitude of force is very large and it is acting very short interval of a time. This type of a nature of a force is known as impulsive force. So we can write down a force multiply with the infinitely small time, that dt, and that is known as the impulse of a force. That is for the infinitely small time period. If there's some definite small time period, then we put the, then we go for the integration of this equation, integrate this equation both side for the finite time difference. Let the time is during which this force is applied is t1 to t2. Put the limit t1 t2, and when we take the integration on this sides, the differential is cancelled out and we will get, what is the meaning of this? That meaning of this is change in change in momentum. What is the meaning of change? Is final momentum minus initial momentum. What is the magnitude of impulse of a force? The magnitude of impulse of force is equal to change in momentum of a body, that is final minus initial momentum. Now come the next topic, that is conservation of momentum. In the conservation of momentum, this force is applied externally on the body, that is a body, and we apply a large quantity of a force for short interval of time, and that is if this external force is going to zero, is then this term is going to equal to zero. So what is the this momentum?
then we will get final momentum is equal to initial momentum. That is known as the conservation of momentum. The quantity of momentum is conserved, means that is constant when there is no external forces are acting on the system. ठीक है, जब तक बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा किसी बॉडी के ऊपर, सिस्टम ऑफ बॉडीज के ऊपर, तो उनका टोटल जो मोमेंटम है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी. That is right now is when the sum of impulse due to the external forces is equal to zero, and the moment of a system remain constant or is conserved. That is known as the conservation of momentum. ठीक है, तो कोई भी तो सिस्टम है, सिस्टम मीन्स more than two bodies are considered simultaneously, then we call it a system. If there are no external forces are acting on the system, so which means the impulse of force is also zero, the momentum is conserved. Now come on the impact. The impact means the collision of two bodies. The two bodies are going to collide. During the collisions, they exert, yeah, they act a large quantity of force to each other. ठीक है, दो बॉडीज हैं एक दूसरे के ऊपर, फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज वेरी लार्ज, एंड दैट contact is maintained during very short interval of a time. This contact occur in very short interval of time, then we called as a impact. Impact कब बोलते हैं, जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं, जब दो बॉडी कांटेक्ट बनाती हैं, लेकिन जो कोलिजन हो रहा है, जो कांटेक्ट बन रहा है, दैट occur in a very small interval of time. ये तो टाइम जो क्वांटिटी है वो काफी कम होनी चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज during which the two bodies exert a very large forces. तो क्वांटिटी ऑफ फोर्स है वो ज्यादा होनी चाहिए, तो इस तरह की कंडीशंस को हम क्या बोल देते हैं, इम्पैक्ट बोल देते हैं. और यदि मान लीजिए there is a wall, या कोई वॉल है, और where this car, this body is going to hit this wall very slowly, ठीक है, that is hit very slowly, is make the contact to this wall. It means it take lot of time to make a contact with the wall, and it apply very small force on the wall. That is the reason this type of a collision is not called as a impact. तो इस तरह के collision को फिर हम impact नहीं बोलते. That is line of impact. Let there are two bodies, the body is one, body two, they make a contact at a point. Let this point is A, at which these two bodies make a contact. First, we draw a tangent at that point. पहले हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है at that point. इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या कर लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया. Now we draw a normal at that point. अब हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट के ऊपर एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, we draw a line such that is normal to this tangent. ठीक है, if you check the angle between this tangent and this line, that is 90 degree towards the body C1, and is also 90 degree towards the body C2. That is called as a common normal to the surface of two bodies in contact. Contact point के ऊपर हमने क्या कर लिया, दोनों bodies के ऊपर एक common normal draw कर लिया. So that common normal is known as the line of impact. What is the utility of this? When you are interested what is the direction of action and reaction, so that is always acted on the line of impact. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता ये बॉडी कहाँ से, इन विच डायरेक्शन द बॉडी इज कमिंग. ठीक है, वी हैव द इंफॉर्मेशंस जस्ट ड्यूरिंग द इम्पैक्ट. जब बॉडी आपस में कोलाइड किए, इम्पैक्ट हुआ है, उस टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इस पॉइंट के ऊपर कॉन्टैक्ट हुआ है. बट वी आर इंटरेस्टेड what is the direction of a force which are acted by this body A on the body B.
ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम फोर्स की, दैट द फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो फोर्सेस होते हैं हमेशा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग एक्ट करते हैं एंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्ट करते हैं। इफ दिस इज एक्शन, so there will be always equal and opposite reaction, हमेशा equal and opposite reaction भी होनी चाहिए। so that will be act on the line of impact on the contact point just opposite to the action. So that is the utility of line of impact. If you know the line of impact, so you can easily represent the forces which are acted by one body and the reactions which are exerted by to the second body during the impact. ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इन द केस ऑफ a प्रॉब्लम ऑफ द इम्पैक्ट, फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बिकॉज लाइन ऑफ इम्पैक्ट से हमें पता चलता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्शन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सेकंड प्रॉब्लम, second in the second diagram, ठीक है, that is the common tangent these two bodies and that is a common normal, so that common normal is known as the line of impact, इसी को हम क्या बोल देते हैं, line of impact बोल देते हैं। Now, if this force, this body is acting the action on this, that is the your action forces, and the reaction is just act opposite to this action, and that is the your reactions which are created by the body, second body. They are the reactions. Central and non-central impact. When the mass center, this is a mass center C1, this is a mass center C2. From the diagram, you can visualize that this C1 and C2 is not lying on the line of impact. If यदि आपके डायग्राम में C1 सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द बॉडीज या किसी एक बॉडीज का भी सेंटर ऑफ मास यदि इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर लाइन नहीं कर रहे हैं ऑन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देन वी कॉल्ड एज ए नॉन सेंट्रल इम्पैक्ट, so that is the example of a non central. If this C1 and C2 mass center of these two bodies lies on the line of impact, then we called it as a, तब हम क्या बोलते हैं उसको, तब हम उसको सेंट्रल इम्पैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। The velocity of two bodies before the collisions are collinear with the line of impact, then we called it a direct impact. What is the meaning of this? That this before the contact, this body is coming in this direction. ये body is directions आ रही थी, the body is coming from this direction, so that is the direction of velocity, and this velocity is not collinear, मतलब जो डायरेक्शन आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसकी डायरेक्शन ये है, तो both have a different direction. Line of impact and direction of velocity are different, and we called it a indirect impact. तो उसको हम क्या बोल देते हैं, indirect impact बोल देते हैं, ठीक है। For example, if this body is coming from in this direction, and in this direction the velocity of direction is same, that is the velocity of direction, and that is the direction of a line of impact. In this case, both velocity vector and the line of impact both are collinear, एक ही एक्सिस के ऊपर आ गए हैं, that is the known as a direct impact. इसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो जो वेलोसिटीज हैं ये कांटेक्ट बनाने से पहले की देखनी है कि व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडीज बिफोर द कोलिजन, हाँ बिफोर द कोलिजन, ठीक है। दोनों वेलोसिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक वेलोसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस बॉडी इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, so at this time we don't call it as a direct impact, we call it a indirect impact, or the second name of indirect impact is also known as oblique impact. Oblique means the angle is greater than 0 degree. यदि आपकी velocity vector और लाइन ऑफ इम्पैक्ट मर्ज कर जाएंगी तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और ओब्लिक का मतलब क्या है,
कि एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, जहां पर एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, दैट इज नोन एज ऑब्लिक। Next is period of deformation. The period of deformation means the time interval from first contact to the maximum deformation. Let this the two bodies, the body is A and the body is B. These two bodies are traveling in this direction. This is velocity vector for VA and this is velocity vector VB. VA is greater than the VB. VA is very large as compared to VB. It means these two body is making a contact after some time interval. Okay, when this make a first point of contact and when these two bodies make the point of contact, the one body create the action and the second bodies create the reactions. And due to this action and reactions, these two bodies start to deformation at the point of contact. And think this deformations is going to according to the what is the magnitude of a force and what is the nature of a material of these two bodies. ठीक है, डिफॉर्मेशन कितनी क्वांटिटी में होगा ये डिपेंड करता है कि हम अपने फोर्स की क्वांटिटी कितनी अप्लाई की है, और साथ में इस बात पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द मटेरियल क्या है। ठीक है, तो जितना टाइम लगा आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन गेन करने में, ठीक है, इन दिस टू कंडीशंस के अंदर व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ ए रेस्टिट्यूशन। Next is the period of, so that is known as period of a deformation. The next is period of restitution. The time interval from maximum deformation to the separation. Okay, now there is a maximum deformation is present between two bodies. और जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडीज, दोनों बॉडी की वेलोसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, लेट द वेलोसिटी इज v। यहाँ पर भी क्या है, दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है, द वेलोसिटी इज v। ठीक है, the two bodies are contact and at this time it is enter the maximum deformation and after that the bodies start to separate, ठीक है, slowly। ठीक है, the body क्या होने लगे, अलग अलग होना शुरू करेंगी एक दूसरे के साथ। at last the body are separated। but what is the time required from maximum deformation to separation, that is known as the period of restitution। restitution means regain the initial condition। what are the initial condition, two bodies are separated form। initial condition क्या थी, दोनों बॉडी अलग अलग थी। ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन मींस रीगेन करना, कुछ रिकवरी करना। अब तो वहां पर जैसी बॉडी अलग अलग होगी, हाउ मच द डिफॉर्मेशन इज रिकवर्ड, क्योंकि डिफॉर्मेशन मतलब क्या है कि बॉडी की शेप चेंज हो गई है, बॉडी ए और बी की शेप चेंज हो गई है। तो जैसे बॉडी अलग सेपरेटेड होंगी तो हाउ मच शेप विल बी रीगेन। ठीक है, तो इट कैन बी फुल्ली, पूरा रीगेन भी हो सकता है, पार्शली रीगेन भी हो सकता है रिमेन परमानेंटली डिफॉर्म, कि जो शेप चेंज हुई है वो परमानेंटली रह जाए, वो दोबारा से इनिशियल फॉर्म में गेन ना हो। ये डिपेंड किस पर करेगा, ये मैं आपको पहले बता दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड करेगा। इफ द फोर्सेस आर मोर देन द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए मटेरियल, यदि आपने फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अप्लाई कर दिए हैं तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एंड देयर सम एनर्जी, और जैसे भी बॉडी इंपैक्ट फॉर्म में आती है तो कुछ एनर्जी हीट फॉर्म में चेंज होती है, कुछ हमारी एनर्जी आर गोइंग टू चेंज इनटू द साउंड फॉर्म, और वो एनर्जी दोबारा से क्या नहीं हो सकती, रीगेन नहीं हो सकती। इसलिए प्रैक्टिकली 100% फुली रिकवर होना इम्पॉसिबल है।
ठीक है, तो वी कैन प्लॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राफ. On the x-axis, we take the time during which are time, and on y-axis we take the force which are acting during the impact. That is the point when the bodies make the first time a contact. ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी ने पहली बार कांटेक्ट बना. जैसे बॉडी कांटेक्ट बना शुरू करेंगी तो फोर्स स्टार्ट टू एक्ट. फोर्स ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज करना शुरू करता है. फोर्स एंड स्टार्ट टू इंक्रीज, इट इज गोइंग टू मैक्सिमम. एट दिस टाइम वी गेट द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन. द टाइम इंटरवल इज नोन एज द पीरियड ऑफ ए डिफॉर्मेशन. ठीक है, जैसे बॉडी कांटेक्ट में आई, एक्शन स्टार्ट on the second bodies and the force start to grow, और force धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है. When the body is going to maximum deformation, after that the body start to separate and the quantity of force start to decrease. जो force की quantity है वो धीरे धीरे decrease करना शुरू करती है. And at the last time, at this point when the body is going to separate, और इस point के ऊपर दोनों body अलग अलग हो जाती है. And at that time period is known as the period of a restitutions. ये जो period है उसको क्या बोल देते हैं हम, period of restitution.